to work together to promote regional stability. We also know that if the United States pulls away from our relationship with Pakistan, the Chinese Communist Party will gain even more influence. And while we seek to help nations thrive, CCP is only interested in a one-way relationship of debt trap diplomacy. And Pakistan, in their ground zero for their Belt and Road Initiative, Pakistan is the CCP's ground zero for China's Belt and Road. So anyway, I look forward to working with my colleagues. It's in our best interest to have a vibrant and healthy Pakistan, one of democracy, economic prosperity, and stability. And I think working together, we can work to make Pakistan a success in its role as a key regional security partner. And so that, again, Mr. Chairman, thank you for holding this hearing. I know there's immense interest in this across the nation and, of course, in Pakistan itself. And with that, I yield back. Thank you very much, Mr. Chairman. And I want to thank you yesterday for the historic hearing that you conducted with General Mark Milley and General Frank McKenzie, revealing clearly that President Biden did not abide by their recommendations, that the withdrawal, the surrender of the appeasement was solely the responsibility of Mr. Biden. With that in mind, we're pleased to have our distinguished witness today, the Honorable Donald Liu, Assistant Secretary for South and Central Asian Affairs at the State Department. Thank you for being here today. Your full statement will be made part of the record, and I'll ask you to keep your spoken remarks to 5 minutes in order to allow time for members to ask questions, and they too will be held to a strict 5 minutes. I now recognize Assistant Secretary Liu for the opening statement. Chairman Wilson, Ranking Member Phillips, Chairman McCall, colleagues. When I was a junior officer in Peshawar, Pakistan 31 years ago, I got to see a Pakistani election up close. I got to see the irregularities in that election, but also the courage of the Pakistani people to come out and vote despite threats of intimidation and threats of violence. If you'll allow me today, I propose to say a few words about where the election on February 8 fell short, where we saw positive elements, and what lies ahead for U.S. policy in Pakistan. The day after the elections, the State Department issued a clear statement. We noted undue restrictions on the freedoms of expression, association, and peaceful assembly. We condemned the electoral violence and restrictions on human rights and fundamental freedoms. We condemned attacks on media workers and restrictions on the access to the internet and telecom services. And we expressed concern about allegations of interference in the electoral process and stated that claims of interference and fraud should be fully investigated. If you'll allow me, I'll drill down a bit deeper into these observations. We were particularly concerned about electoral abuses and violence that happened in the weeks leading up to the polls. First, there were attacks against police, politicians, and political gatherings by terrorist groups. Second, many journalists, particularly female journalists, were harassed and abused by party supporters. And third, several political leaders were disadvantaged by the inability to register specific candidates and political parties. On the day of elections, an internationally respected local election monitoring organization said they were barred from observing vote tabulation in more than half of the constituencies across the country. And despite a high court order not to interrupt internet service on election day, authorities shut down mobile data services, the principal means by which Pakistanis access social media and messaging apps. There were positive elements to this election as well. Despite the threat of violence, over 60 million Pakistanis voted, including over 21 million women. Voters elected 50% more women to parliament than they had in 2018. In addition to a record number of female candidates, there were also a record number of members of religious and minority groups and young people running for seats in their parliament. Pakistani voters had a choice. A range of political parties won seats in the national and provincial assemblies. 3 different political parties now lead Pakistan's 4 provinces. More than 5,000 independent election observers were in the field.
Their organization's conclusion was that the conduct of the election was largely competitive and orderly, while noting some irregularities in the compilation of results. Pakistan is an important partner of the U.S. We share a commitment to strengthening Pakistan's democratic institutions, supporting the U.S.-Pakistan Green Alliance framework, cooperating to counter terrorist threats from groups like al-Qaeda and ISIS, and bolstering respect for human rights, including the right of religious freedom. Most importantly, the United States plays a critical role in promoting economic stability in Pakistan. We are the top destination for Pakistan's exports. We have been one of the most important investors in critical infrastructure over 76 years of our partnership. For example, the U.S. government is refurbishing now the Mangala and Tarbela dams, which provide electricity to tens of millions of Pakistanis. Our support for Pakistan over these decades has been in the form of development grants, private sector investment, and humanitarian assistance during the periods of its greatest need, including the recent catastrophic flooding. Unfortunately, Pakistan is facing a mounting debt challenge after the past decade of elevated borrowing, including from the PRC. This year, nearly 70% of the federal government's revenue is expected to go to payments to service this massive debt. Pakistan needs economic reforms, and it needs private sector-led investment that will deliver economic growth for the Pakistani people and not dig their government deeper into debt. Finally, Pakistani people deserve a country that is peaceful, that is democratic, and that is prosperous. We are working every day to support that vision. I thank the subcommittee for its leadership on developing our relations with Pakistan, and I pledge to work with its members as we execute our policy. Thank you, Mr. Secretary. You were precisely on time. नाज़रीन, याद होगा पिछले दिनों एक प्रोग्राम के अंदर मैंने ये जो निगरां हैं उनका मौजूदा हुकूमत में शामिल होने के हवाले से कुछ अपनी राय देने का इजहार किया। तो मोहतरम हसन अयूब साहब और मोहतरम हैदर नकवी साहब ने जिस तरह की तोजीहात पेश की थी, अब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं, सिटिंग सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और तकारीर और काफ़ी ज़्यादा जो है ना एडवाइस करते हैं मोहतरम ताहियात कायद को। वो क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। जिस दिन निगरान हुकूमत खत्म होती है उसके तमाम एहलकारों को एक तरफ हो जाना चाहिए, मुराकबे में चले जाना चाहिए, मंजर से हट जाना चाहिए। जब वो आने वाले मंजरनामे का भी हिस्सा बन जाते हैं तो फिर यूं लगता है कि जैसे ये जो 3 या 4 या 5 या 6 या 8 महीने आपको मिले हैं, ये आप एक खेती काश्त करते रहे और वो खेती अब आप आके काटना शुरू कर देंगे, खेत ना बनाए इसे। इस तरह इनके नए मिनिस्टर हैं कैसर अहमद शेख साहब, वो क्या फरमा रहे हैं मौजूदा जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके हवाले से। मैं समझता हूं कि पार्टियों को अपने अंदर ऐसे बंदे इलेक्ट करवाने चाहिए जो कि उस शोबे के माहिर हों। यानी फाइनेंस हमारी पार्टियों क्यों ऐसे बंदों को इलेक्ट नहीं करवा सकती जो कि फाइनेंस का शोबा जानते हों, उसमें ज़्यादा एक्सपर्ट हों। आमतौर पर हमारे यहाँ देखिए ना बैंकर आते रहे, ठीक है, वो अल्लाह करे, क्योंकि मैं उनकी बहुत मैंने तारीफ सुनी है कि औरंगजेब साहब बहुत इस शोबे को समझते हैं, अल्लाह करे वो कामयाब हों। तो ये हम इंपोर्ट क्यों करते हैं? वजीर खजाना कई दफ़ा पहले भी कर चुके हैं। मैं तो बड़ा उस पर हमेशा कहता रहा हूँ, दूसरे मुल्कों में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये तो कल को हम फिर क्या वजीर आज़म भी इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। जब इलेक्टेड आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो आप पार्लियामेंट से लाएँ ना, आप वजीर खजाना को भी इलेक्ट करवाएँ। इस तरह शाहिद खान अब्बासी साहब, चले वो थोड़े से नाराज हैं, लेकिन वो पार्लियामान की मौजूदा जो पार्लियामान है उसके हवाले से ओवरऑल क्या अपना तजिया पेश कर रहे हैं, ये भी सुनिए। पार्लियामान का तकद्दुस सिर्फ उसका रवैया बहाल करेगा, उसकी एथिकल क्वालिटीज बहाल करेंगी, उसकी मॉरल क्वालिटीज बहाल करेंगी, उसकी परफॉर्मेंस बहाल करेंगी। वो होता देख रहे हैं आप? कैसे होता देखेंगे? आज जो लोग पार्लियामान में बैठे हैं, कितने फीसद उन कुर्सी पर बैठने के अहल नहीं है, पहले ये डिटरमिन करना है। कितने फीसद को वहां नहीं होना चाहिए, उसके क्या इम्पैक्ट आएगा मुल्क पर, वो भी देख लें। नकवी साहब, आप ये देखें, ये मैं बिल्कुल कोई भाम या कन्फ्यूजन फैलाने की नहीं कोशिश कर रहा ना, मैं अपने इब्ताइये के अंदर ऐसी बात की। ये तमाम जो लीडरान जिनके बयानात आपको सुनवाए हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। आपको कुछ समझ आती है कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं?
ये खुद ही ये जो मौजूदा हुकूमत है या हुकूमती जो नताइज आए हैं इलेक्शन के, उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, तो बाकी तो करेंगे बात। जी देखें, पहले तो वो हिंदुस्तान के मुतालिक जो बात हुई थी, खबर भाई, वो आपके इंट्रो के हवाले से नहीं थी। हिंदुस्तान के मुतालिक अमूमन यही बात की जाती है, जो उनके $700 बिलियन के ज़खायर हैं। आप तो इस मुल्क के एक बहादुर सिपाही के फर्जंद हैं, हमें उन पे भी फख्र है और आप पे भी फख्र है, आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए। एक तो ये, दूसरे ये जो बयान सारे आपने सुनाए ना, जब पानी बहुत गर्म होता है ना और उसको पीने की कोशिश की जाए तो मुंह जल जाता है, तो उसमें ठंडा पानी थोड़ा सा मिलाया जाता है ताकि पीने के काबिल बने। तो ये सारे बयान ठंडे पानी के तौर पे उस गर्म पानी में मिलाए जा रहे हैं ताकि पानी को आराम से पी लिया जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। चले अच्छी बात कर दी आपने। चलिए गुलाम हुसैन साहब, कोई गर्म पानी ठंडा पानी होता हुआ देख रहे हैं आप, या फिर आप अभी नाकाबले वो अभी पीने के काबिल नहीं है ये पानी? नकवी साहब ने ठीक मशवरा दिया आपको जी। बहुत फजा भी गर्म होने वाली है और वैसे मौसम भी गर्म होने वाला है और इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। यू जस्ट वेट। वजह है, कोई एक्सप्लेन करें, कोई रोशनी डालें, कोई हमारे लिए कोई रहनुमाई करें। एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब अवाम ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके नताइज तो निकले। What is your assessment of these untrue speculations? Mr. Chairman, I want to be very clear on this point. These allegations, this conspiracy theory is a lie. It is a complete falsehood. I have reviewed the press reporting related to this, what it's called the Cipher in Pakistan, the alleged leak diplomatic cable from the embassy here. It is not accurate. It at no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. And thirdly, the other person in the meeting, the then ambassador of Pakistan to the United States, has testified to his own government that there was no conspiracy. We respect the sovereignty of Pakistan. We respect the principle that Pakistani people should be the only ones choosing their own leaders through a democratic process. Mr. Chairman, we are grateful that you are holding this hearing today for us to talk about that process. Thank you. And hey, your response is so good because it's so clear that you're correct, and we appreciate so much your clarity on the issue. And good people, indeed, you make a difference, so God bless you. Thank you. And with that, I now recognize the ranking member, Dean Phillips. Don't pick up your sound, nothing. The chair notes a disturbance of the committee proceedings. The room will be in order. And we now proceed with Congressman Dean Phillips. Thank you, Mr. Chairman. Secretary Liu, I appreciate your observations on the recent election, both the positive elements and also the challenges. In the State Department's post-election statement, the indication was the United States is going to work with the next Pakistani government regardless of the party. I just want to clarify that that has always been the case, correct? Yes, sir. And the department has also expressed concerns about human rights and democracy in Pakistan where appropriate, but has never taken a position on who should lead an elected government in Pakistan. Is that correct? That is correct. And the department's statement also noted that claims of interference or fraud should be fully investigated. And since that aspect of the statement has gotten a lot of play in the Pakistani press and on social media, could you elaborate on what was intended by that statement? Representative Phillips, the Pakistani people, through their constitution, have created a system by which the Election Commission of Pakistan hears the complaints of Pakistani people, of candidates and political parties to render judgments about election irregularities. We, as a partner of Pakistan, have called for that to be done transparently and fully, and for those
found responsible for irregularities to be held accountable, we can see a process whereby that's happening. The Election Commission of Pakistan has formed a high-level committee which is now sifting through thousands of petitions from people across Pakistan who have complained about the very same things that we have noted in our statement. We will be monitoring that process very closely. We will be encouraging the government and the Election Commission to make sure that that is a fully transparent process with the Pakistani public. Do not recognize this. Yes. Mr. Liu, Mr. Liu, if you just might move your microphone just a little close. It's a little hard for some of us to hear too. Thank you. This is not Pakistan-related per se, but it is your area of responsibility. So I want to ask also about India. I know the administration is looking at accountability for the alarming allegations that a government of India official was connected to a murder for hire plot targeting a Sikh American here on American soil in New York City. The administration, of course, recently placed sanctions on more than 500 individuals relating to the killing of Alexei Navalny in Russia on Russian soil. So my question is, are any similar sanctions on or travel bans being considered for those who we believe may be responsible for the attempted murder of Mr. Pandan? Thank you, Representative Phillips. This is a serious issue between the United States and India. The Department of Justice has alleged that an Indian citizen, at the behest of someone working in the Indian government, has attempted to kill an American citizen on American soil. We take this in the administration incredibly seriously and have raised it at the highest levels with India. We are, at the moment, working with India to encourage India to hold accountable those responsible for this, this terrible crime. What we can see is that India itself has announced that they have created a committee of inquiry to look into this matter, and we ask them to work quickly and transparently to make sure justice is done. Thank you. With the remainder of my time, I'd like to talk about economic issues. If you could give an assessment of the current economic situation in Pakistan. Of course, a growing economy is good for stability. It's good for this partnership and trade. I know it's still early, but if you could provide an assessment of how you see things right now, I'd appreciate it. No, not only is it really important for the Pakistani people that they have economic stability and economic growth, it's important for America. Mm-hmm. We have lots of investments in Pakistan. There are lots of franchises and American businesses working throughout Pakistan. Their success is our success. One of the issues I think that we face with the Pakistani economy is a real difficulty to invest and to trade there. We are calling on Pakistan to reform many of the ways it does business with foreign partners, and in doing that, they will attract American investment, but they'll also attract investment from the Pakistani private sector. Pakistani investors are smart. They want to work in a place where they can make money. And so some of the things that we're calling for are reform of the regulations that will allow repatriation of profits out of the country, cutting down on bureaucratic red tape, and more predictable regulations. If Pakistan is willing to do that, I think you'll see large numbers of American investors flocking to Pakistan. It's a really interesting place to invest if it had the right conditions. All right. Thank you, sir. And with that, I yield back. Thank you very much, Ranking Member Dean Phillips. We now proceed to Congressman Rich McCormick of Georgia. Thank you, Mr. Chair. I would like to point out that we in Congress have a job to do. This is an incredibly important topic, and I think out of respect for those people who are interested in this topic, the people who want to be disruptive should be gavelled out and removed from this hearing. I think anybody who's earned this place, whether you be in Congress or be a military member or be somebody from Pakistan or be somebody who's interested in this topic, should be respected, and those people who break the rules should be removed from and not be allowed back in future, because this continues to waste our time. And with that, I'm going to move, with your permission, Chair, to have these people removed before I continue. So ordered. Thank you. All three that were speaking out, thank you.
they're wearing red in case you can't figure out who they are. There you go. The committee will suspend while the Capitol Police restore order. And Congressman McCormick will now continue with his full 5 minutes. Thank you, Mr. Chair. I've been interrupted in the previous hearings, and I just want to make sure we have some order. Thank you, Mr. Chairman. I appreciate you, and I thank you, Secretary Liu, for your testimony today. Today's topic is very important to me. Whether we like it or not, the U.S. future cannot include isolationism from the rest of the world. American leadership will be required for our country's future success and to ensure America remains first in the world. We must remain robust partnerships and alliances with nations that share our interests and values. As nations like China and Russia and violent extremist organizations threaten global stability, it is critical for U.S. interests for South Central Asia countries such as Pakistan and India to continue developing stable and transparent democracies. That's why I introduced House Resolution 901 with my esteemed colleague from Michigan, Representative Dan Kildee. The resolution affirms U.S. support for democracy and human rights in Pakistan. I'm looking forward to H.Res. 901's consideration later this afternoon as the House Foreign Affairs Committee marks it up. As I am sure you're aware, Pakistan recently conducted the largest election in its history, but these were unfortunately marred by allegations of fraudulent activity and electoral violence. Watchdog groups raised the alarm over reports of political repression, suspension of interest access on Election Day, delays in election results, and more. Currently, the Election Commission of Pakistan is reviewing many of the election results in individual parliamentary constituencies, and the Pakistani judicial system is investigating and adjudicating irregularities. In fact, the ambassador from Pakistan came to my office yesterday and talked about what they were going to try to do to mitigate these problems. With all this being said, there must be full, credible, and independent audit of these election results. Secretary Liu, do you think and the State Department have confidence in Pakistan's judicial process and its ability to adjudicate claims of wrongdoing? Thank you, Representative McCormick. If I might, just before I answer that question, just say a word about protests. We have just tremendous respect for the Pakistani-American community. We pride ourselves in the State Department and in my office about talking to Pakistani Americans because they are the people in our vast country who care the most about this relationship. They have something genuine to offer because of their deep knowledge and the deep concern they have of the future of the country. And so I want to join the voices of this committee to say how important their involvement is, how much we respect them. We try to listen to them at every opportunity. I hope they are also listening to all of you and to those of us who are trying to guide this policy. Absolutely. And I will say, respectful conversation is always paramount for me. I've met with constituencies. I have people who've come here all over the United States that I've met with in my own district on this topic. There is a time and a place for everyone to speak, and that's order. That's something that we worked hard for. One of the things that I have faced over these last 2 years is some of these allegations, unfounded allegations, have resulted in regular death threats against me, threats against my family, involvement of local police. There is a line of acceptability, and I do think at times some of the free speech has verged into threats of violence, which is not acceptable in our society. Sir, if I could answer your important question. The Election Commission of Pakistan, in past elections, has rerun elections where there have been a finding of electoral abuse. We have seen that over and over. In fact, in this election, they have already ordered the rerun of elections where there has been violence. As we know, there have been candidates who have been killed in this election. There have been some terrible violence that preceded the election. We call on the Election Commission to fulfill its constitutional role in Pakistan to be the watchdog over these elections and to act in a nonpartisan way. We all will be watching this process very, very closely.
As to whether they will do it, it's up to the Pakistani people to make sure their institutions are functional and that are upholding their constitution. Thank you. And do you think that the Pakistani government has the ability to continue to improve and be accountable and be a good partner going forward as the United States needs them to be in that region? Pakistan is such an important partner of ours. They are a major non-NATO ally. We have deep national security interests with Pakistan, not least of which is the fight against terrorism, not only terrorism that affects Pakistanis, but terrorism that affects Americans. And Pakistan has been a partner in our resettling of Afghan refugees to whom we owe a debt. And we are grateful to the people and the government of Pakistan for that cooperation. Thank you, sir. I yield. Thank you very much, Dr. Congressman Rich McCormick of Georgia. We now proceed to Congresswoman Kathy Manning of North Carolina. Thank you, Mr. Chairman. Welcome back to my good friend, Dean Phillips. And thank you, Assistant Secretary Liu, for your service to our country. I want to focus on the plight of women in Pakistan for a few minutes. I am very concerned about the treatment of women in Pakistan, including female journalists and women harassed and arrested at protests and rallies leading up to the election. As you know, Pakistan is routinely rated near the bottom of the world in terms of women's inclusion, justice, safety, and security. So can you talk to us about how the State Department is working to address gender-based violence and highlight and improve the safety, the rights, the inclusion, and representation of women in Pakistan's democracy? Representative Manning, such an important question. I wish I had my wife here sitting next to me. I met my wife in Pakistan. She was an American refugee worker working with Afghans, but her academic subject matter of specialty is gender-based violence, and she has worked in Pakistan on this very issue. What I would say about Pakistan, its human rights, the rights of women, I say about many countries, but I really mean it, which is we as foreign partners aren't going to be able to change Pakistan. Who will change Pakistan? Pakistani people will. And we see that very strong desire of women across Pakistan to be heard, to be represented, and to have their rights respected by the institutions of government as well as by the rest of society. I see great victories in Pakistan every day. There have, as I mentioned, double the number of women elected to this parliament. And do you see that as a positive moment that will actually give hope and perhaps achieve new things for women in Pakistan? I see the emergence of female leaders in Pakistan at every level as being the examples that will lead their society forward. You are entirely right. At the village level in Pakistan, lives for women are incredibly difficult. I see more women today in senior positions in business. I see them on the high court. I see them in parliament. I see them as ministers. Honestly, some days Pakistanis are doing better than Americans on some of these questions. It is a struggle for all of us, but I do credit the very brave women and young girls who are leading this path in Pakistan. And I think as foreign partners, we need to put our resources, our public statements, and our activism behind Pakistani female leaders. And can you give us some idea of the percentage of participation of Pakistani women in the economy? And are there hurdles to greater participation? And is there anything we can do to encourage greater participation? Well, one of the real issues for every business in Pakistan, but particularly for women-owned businesses, is access to financing. And so one of the things that I've seen over the course of my career, and particularly in Pakistan, is the emergence of these microfinance projects, because largely women-owned businesses are not the massive textile mills or the steel plants. They're small businesses. They're businesses run out of homes or small shops in local communities. If women have access to that financing, women will succeed in business. USAID, the EU, the United Kingdom, Japan, Australia, many of Pakistan's donor friends are investing in those types of businesses, while the PRC and other countries
are investing in literally roads to nowhere that bleed the Pakistani people of their resources year after year. So we've certainly talked about giving women access to more financial opportunities in this committee. I hope we will continue to do that in the future. Because you've mentioned China, let me walk into this question with the little time I have left. Pakistan faces a grave challenge, has faced grave challenges in recent years from flooding, from indebtedness to creditors like China. What more can we do to counterbalance what China is doing and the debt that they're helping create in Pakistan? We can compete. Where we fail overseas, we are not present. Where we compete, we always win because we have a better offer. We offer private sector-led investment for profit-making enterprises that benefit local people and not just the lender countries. Thank you. My time has expired. I yield back. Thank you very much, Congresswoman Kathy Manning of North Carolina. We'll be proceeding to Congressman Mike Lawler in 1 second. Even before, I want to thank you for pointing out the different allies working with Pakistan, and one that you left out, which is so significant, and that is South Korea. To go from ashes 60 years ago to be one of the wealthiest countries on earth is an example throughout the Indo-Pacific and the South Asia of achieving a per capita income of $44,000 for each citizen. Who would ever imagine? And I know that Korea has been vitally interested in developing economic ties with the people of Pakistan. With that, we now proceed to Congressman Mike Lawler. Thank you, Mr. Liu. I know many of my colleagues touched on the election irregularities and some of the concerns about it, so I want to segue a little bit. Just a few weeks ago, the government of Pakistan approved plans to begin construction on a pipeline to transport natural gas from Iran to Pakistan. Iran constructed its side of the pipeline years ago, and now Pakistan has finally decided to move forward. Mr. Liu, do you view this pipeline as Pakistan aligning itself with Iran? I mean, it's a really interesting question, Representative Lawler, because Pakistan and Iran just traded missile and drone strikes a few weeks ago. So it is been true over time that Pakistan and Iran have had ups and downs in their relationship. They're at a pretty low point today. We are tracking this planned pipeline between Iran and Pakistan. Honestly, I don't know where the financing for such a project would come from. I don't think many international donors would be interested in funding such an endeavor. We've also not heard from the government of Pakistan a desire for a waiver of American sanctions that would certainly result from such a project. Instead, what we are undertaking in the administration is to have a conversation with Pakistan. What are Pakistan's other alternatives? How can we compete for that business? Where can they find other non-Iranian sources of natural gas? And how can we help Pakistan think about the transition to clean energy? Pakistan's very interested in providing energy through solar, through wind, through hydro. How can that begin to replace their dependence on coal and other hydrocarbons? Okay. So have you expressed direct concern with the Pakistani government on this issue? We are in consultation with the Pakistani government on this issue, yes, sir. Okay. I mean, my concern is that Iran is the greatest state sponsor of terror. They use the illicit Iranian petroleum oil trade to finance terrorism. Since Joe Biden took office, nearly $88 billion in increased revenue has resulted because of lax enforcement on sanctions. It's why I introduced the SHIP Act to increase secondary sanctions on the purchase of Iranian petroleum. It passed through the House overwhelmingly with bipartisan support and has since stalled in the Senate because the White House doesn't want it. So from my vantage point, when we talk about other alternatives that Pakistan may be able to engage on, why don't we start by cracking down on the illicit oil trade? Why is the administration taking a very lax approach to cracking down on Iranian petroleum? Sir, the administration will uphold
both the letter and the spirit of all sanction laws, particularly those related to Iran. You think an increase of $88 billion in revenue is upholding the letter and spirit of the law? Sir, I am not an expert in Iranian energy exports, but what I know as a person who has a car that's fueled by gasoline is all of us have paid for higher gasoline after Putin's full-scale invasion of Ukraine. And well, that's also a result in this country of us limiting production of oil and natural gas in this country. That's why we're dealing with our own energy challenges. Sir, if but I could answer your question, well, you went in a total non sequitur. I fully support the efforts by the U.S. government to prevent this pipeline from happening. We are working towards that goal, sir. Okay. How does the administration view Pakistan's relationship with the Taliban? With suspicion, sir. And so what are we doing based on that suspicion? So I think it is well known that previous governments of Pakistan have had close relations with the Taliban. Currently, the greatest terrorist threat faced by the people of Pakistan emanates from Afghanistan. And the relationship between Pakistan and the Taliban is about the same as the relationship between the United States and the Taliban. It is very strained and difficult. We have a very important dialogue with the Pakistani government about the Taliban, how to help shape its behavior, how to help make sure the Taliban upholds its commitments. Last question. Why was Pakistan excluded from the administration's Indo-Pacific strategy? Sir, it's a way that we define the Indo-Pacific, and it's not only this administration, it's the last administration as well. For whatever reason, I suspect it has to do with COCOM authority between the Indo-Pacific Command and Central Command. The dividing line of the Indo-Pacific is the line between Pakistan and India. अमरीकी आवामदगान की ज़ेली कमेटी में पाकिस्तान के इलेक्शन से मुतालिक समाअत इस वक्त जारी है। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऑफ द रेकॉर्ड। ऐसे सख्त सूखे दाग निकाले नया सर्फ एक्सेल आसानी से। सर्फ एक्सेल। मेरा लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। क्यों? यकीन नहीं आता तो खुद देख लें। दूसरे बार बहुत जल्दी घुल जाते हैं, जबकि मेरा लेमन मैक्स बार सबसे कम घुले, तभी तो सबसे ज्यादा चले। लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। बड़े एहतमाम से इंतजार किया जा रहा था डोनाल्ड लू की इस कमेटी हेयरिंग का। ये कमेटी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की ज़ेली कमेटी का इजलास था, जिसका सब इंतजार कर रहे थे कि आखिर इसमें होगा क्या होगा। उस साइफर केस का और पाकिस्तान के इलेक्शंस की बात होगी। तो साइफर केस में डोनाल्ड लू ने ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर कही कि ये सरासर झूठ है। जो इल्ज़ाम लगाया गया रजीम चेंज का अमरीकियों पर, इसकी गवाही उन्होंने ये भी दी कि उस वक्त के पाकिस्तान में जो सफ़ीर थे, पाकिस्तानी सफ़ीर अमरीका में थे असद मजीद, उन्होंने भी पाकिस्तान में ये गवाही दी कि इस तरह की कोई साजिश हुकूमत गिराने के लिए नहीं हुई। गो के ज़ाहिर है इस पर पॉलिटिकल व्यूज़ बड़े डिवाइडेड हैं। तहरीक इंसाफ का एक व्यू है और उनके मुखालिफ जमातों का भी। लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन रेस किया गया वो बड़ा मजे का क्वेश्चन था, जो हेड ऑफ शायद चेयरमैन थे कमेटी के, कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज फॉल्स एलिगेशंस ऑन यू। इन झूठे इल्जामात के बारे में आप क्या कहते हैं? बहरहाल उन्होंने इसका जवाब दिया। दूसरी तरफ जिस बात पे मुझे जाती तौर पर बहुत अफसोस हुआ सुन के, जब डोनाल्ड लू ने यह कहा कि उनको कत्ल की धमकियां सोशल मीडिया पर दी गई। हम पाकिस्तानियों को थोड़ा अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा। अभी भी यहां से निकाला गया, ये तो खैर
आपने अक्सर देखा होगा कि पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स या बहुत से डिफरेंट प्रोटेस्टर्स आके इस तरह की ब्रीफिंग्स में अपना व्यू देते हैं. दैट हैपन्स ऑल द टाइम, नथिंग रॉन्ग विद दैट. लेकिन इस तरह के सिर्फ इसलिए कि आपका एक व्यू है और आप किसी को कत्ल की धमकी दें सोशल मीडिया पर जाकर, और वो भी देखें डोनाल्ड लू जैसा आदमी बैठकर कह रहा है कि मुझे कत्ल की धमकियां दी गई हैं. हमें बहुत एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है पाकिस्तानी के. हमारा व्यू होना चाहिए, उस पर हमें खड़े होना चाहिए, उसके लिए हमें लड़ना चाहिए, पर लड़ते हुए किस हद तक जाना है वो लिमिट भी हमें तय करनी पड़ेगी कि ये ना हो कि हम वो तमाम जो हमारी एक सोसाइटल जो पाबंदियां लगाई जाती हैं कि इससे आगे आपने नहीं जाना, वो भी क्रॉस कर जाएं. दूसरी तरफ इलेक्शन की जो इरेगुलरिटीज का लफ्ज आजकल इस्तेमाल किया जाता है, पहले रिगिंग इस्तेमाल होता था, अब हम सॉफ्ट कर दिया हमने लफ्ज को, इरेगुलरिटीज कहते हैं. उसके बारे में क्या कहा जरा डोनाल्ड लू ने भी और एक और कांग्रेसमैन ने, जरा सुनी. The day after the elections, the State Department issued a clear statement. We condemned the electoral violence and restrictions on human rights and fundamental freedoms. We condemned attacks on media workers and restrictions on the access to the internet and telecom services. And we expressed concern about allegations of interference in the electoral process and stated that claims of interference and fraud should be fully इलेक्टोरल प्रोसेस में इंटरफेरेंस और ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट होना चाहिए. उन्होंने कहा कि इट्स अप टू द ऑडिट, एक फुल इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए इलेक्शन प्रोसेस का. मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, वफाकी वजीर. बहुत शुक्रिया आपका. तो किस चीज के वफाकी वजीर हैं? पेट्रोलियम. वो तो की बढ़िया सी, मैं कुछ कहानियां सुन रहे सी, कोई और भी आ रहा है या एनर्जी में आ रहा है? पेट्रोलियम नहीं, एनर्जी में आ रहा है. नहीं उसमें नहीं, मेरे पास बिजली का एडिशनल चार्ज था. जब वजीर आजम ने ये मुझे पेट्रोलियम दी तो उन्होंने मुझे बड़े वाज़े अल्फाज में कहा था कि मैं आपको एडिशनल चार्ज दे रहा हूं जब तक कोई हमें वजीर नहीं मिलते अप्रोप्रिएट. तो आप मिल गए महकमे को, हाँ, उनको मिल गए और उन्होंने उनको. I thought you were a good guy for बिजली. No, I think I am a good guy for energy, which is why I have petroleum. And he's a good guy for finance also. तारीफा और करनी है कि मैंने तो फैसला रोक दी. He's a good guy for information also. Information also. मतलब सब कितनी एकलदारता में से ले सकते हो. He's basically a good guy. देखो, that's why we're not going that far. इतनी दूर से नहीं जाना. सर, ये तो अब जो कह रहे हैं इलेक्शंस का ऑडिट, धांधली और इसकी तहकीकात, ये आवाजें आएंगी, ज़ाहिर है इस कमेटी की मीटिंग की हद तक होगी और उसके बाद दब जाएगी. क्या हमारे अंदर ये सोच है कि ये जो कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए, कि हमने भी कुछ करना? देखिए, दो तीन चीजें. एक तो डोनाल्ड लू, ये आपको पता होना चाहिए कि जब कांग्रेस के सामने ये पेश होते हैं तो दे आर अंडर ओथ, और अगर ये पर्ज करें, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत दें, अपनी तरफ से दें, तो दे कैन गो टू जेल अंडर पर्जरी. फौजदारी मुकदमा बनता है जी, पाकिस्तानी जुबान में जी फौजदारी मुकदमा बनता है, और ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती. और ये भी मैं समझता हूँ कि कोई गैर अहम बात नहीं है कि कांग्रेस ने डोनाल्ड लू को बिठा के और अंडर ओथ उससे ये इन्वेस्टिगेशंस या क्वेश्चनिंग की, इन्वेस्टिगेशन तो नहीं की, इसे क्वेश्चंस किए हैं, सवाल पूछे हैं, ये अहम चीज़ है. और उसकी उस चीज़ के अंदर जो चीज़ सेंटर स्टेज आती है वो पाकिस्तान आ जाता है. यानी पाकिस्तान के अंदर से जिस तरह की गुफ्तगू एमिनेट कर रही है, जिस तरह की गुफ्तगू चल रही है, और जिस तरह हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अच्छे तरीके से, कोई अच्छा पाकिस्तान के ऊपर अगर डोनाल्ड लू ये कहता है कि मुझे डेथ थ्रेट्स आ रही हैं, कांग्रेस के सामने बैठ के कहता है, तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए अच्छा नहीं. अब डोनाल्ड लू के दो चीज़ें हो गई, एक साइफर वाली बात हो गई, एक इलेक्शन वाली बात हो गई. उसने दोनों बातें कर दी हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर डोनाल्ड लू की इलेक्शन वाली बात ठीक है तो क्या डोनाल्ड लू की साइफर वाली बात भी ठीक है? और अगर डोनाल्ड लू की साइफर वाली बात गलत है तो क्या डोनाल्ड लू की इलेक्शन वाली बात भी गलत है? तो हमें एक बैलेंस्ड रवैया लेके चलना होगा. हमें इलेक्टोरल प्रोसेस, आपको कौन सी ठीक लगती है दोनों में से? देखिए, मेरे ख्याल में डोनाल्ड लू ने अंडर ओथ एक अपनी पोजीशन ली है, और उसकी पोजीशन ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो कम्युनिकेशन बंद हुई थी वो नहीं बंद होनी चाहिए थी. हमारे यहाँ अगर एक्सेस होता है और किसी जगह पे कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती हैं तो हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए. और ये हम आपस में भी बैठ के यही बात करते हैं कि हमारे पॉलिटिकल फ्रीडम्स होने चाहिए, पॉलिटिकल फ्रीडम्स रिस्टोर होने चाहिए. उसका मतलब ये नहीं है कि 9 मई होना चाहिए कि आप शोहदा के मुजस्मों को ठुड्डे मारें या आप हमले करके आगे लगा दें कोर कमांडर के घर को. ये नहीं है फ्रीडम.
तो जिस तरह आप अभी बात ये कर रहे फ्रीडम थे, है कि आपकी एक सियासी जमात हो, आपका एक राइट ऑफ एसोसिएशन हो, आप अपनी सियासी जमात के लोगों को इलेक्शन सिंबल्स दे सकें, उनको इंतखाबात लड़ने, कोई वहां खड़े होकर आपके कागजात चोरी करने या छीना छपटी के लिए ना खड़ा हो। ये नहीं है ना, ये इस पे आपका इंटरनेट बंद ना हो इलेक्शन वाले दिन। मैंने भी तो यही बात की है। मैं कह रहा हूं ये तो मुनासिब चीजें नहीं है ना। हम ये जो बार बार इस वक्त कह रहे हैं पीटीआई को कि आप आए बैठें, इन पे बात करें, यानी 2024 का इलेक्शन हो या 2018 का इलेक्शन हो या 2013 का इलेक्शन हो या 1990s के इलेक्शन हो, यानी आप इलेक्शन की तारीख में कहां तक जाएंगे कि हर दफा हम यही गुफ्तगू जो आपके साथ अभी कर रहे हैं। ये 2018 में मैं खोकर साहब की जगह बैठा हुआ था और खोकर साहब शायद वो भी मेरी जगह ही बैठे हुए थे। नहीं। और यही गुफ्तगू हो रही थी। 2013 में भी यही गुफ्तगू, 35 पंक्चर रोज हम आते थे, 35 पंक्चर को डिफेंड कर रहे होते थे। फिर उन्होंने कहा ये तो सियासी बात थी। सवाल ये पैदा होता है इसे रुकना चाहिए ना जी। ये फ्रीडम्स जो एनश्राइंड हैं हमारे आइन के अंदर, ये जो हमारे राइट्स हैं, आपको याद होगा एक वक्त में हम आए थे, मैं आपके प्रोग्राम में आया था और दीगर प्रोग्राम्स में भी गया था कि मेरा निशान ले लिया सेनेट के इलेक्शन के अंदर कि जी मैं इंडिपेंडेंट। कैसे इंडिपेंडेंट हो? मैं कह रहा हूं मैं पीएमएल हूं। वो कहते हैं नहीं आप इंडिपेंडेंट है, आप तो बगैर उसके इलेक्शन लड़ेंगे। और उसके बाद लोगों पे फिर जोर वोर भी डला थोड़ा सा कि आप इधर चले जाएं उस पार्टी में, आप तो इंडिपेंडेंट है। खैर कोई नहीं गया, लेकिन बुनियादी तौर पर यह कभी तो रुकना है। और इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है, रोकना चाहते हैं जी? बिल्कुल 100%। कौन रोकना चाहते हैं? मैं रोकना चाहता हूं जी। खोकर साहब रोकना चाहते हैं। लेकिन क्या आप खोकर साहब एक वन मैन आर्मी है, वो तो ये कर खोकर साहब यू आर नाउ आल्सो यू आल्सो हैव अ पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, मैं तो आपको वो बात बता रहा हूं जो मियां शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी, देखें मियां शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा। मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा आपने इलेक्शन तो हमने नहीं करवाए ना, मगर मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने इलेक्शन के ऊपर उंगली उठाई है। आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन आपने चोरी चकारी से जीत लिए हैं, तो आप ऐसा करें, आप हुकूमत बना लें और आप अपनी सुपरविजन के अंदर, अपनी डायरेक्ट लीडरशिप के अंदर ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेट करवा लें। ये दावत उन्होंने इसी वजह से दी ना कि हर दफा इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो जाता है, और क्योंकि हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी तो हमने भी ये मुनासिब जाना कि पहला राइट इनको दे दें, ये हुकूमत बनाएं। ये जितनी बातें आज कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, नाफरमानी कर देंगे, हम सड़क पे आ जाएंगे, अरे भाई आप हुकूमत बना के ये डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट कर लेना और फिर हमें दावत दें। हमें दावत दें कि आप ऑपोजिशन में बैठे हैं, आप आइए और इलेक्शन का तरीकाकार तय कर लेते हैं, ताकि कभी ना कभी तो ये रुके। कभी ना कभी तो इलेक्शन के ऊपर जो हारने वाला है वो मुबारकबाद दे के मुहज्जिब ममालिक की तरह आगे अभी भी बहुत से गए हैं वैसे आपकी पार्टी गए हैं। और ख्वाजा सादिर रफीक जो हैं, ही वाज द फर्स्ट वन टू कांग्रेचुलेट। और इसी वजह से तारीफें भी होती हैं कि यार हमारे मुल्क में ये कल्चर होना चाहिए। मगर लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो अपने मुखालिफ की हिमायत में इलेक्शन कमीशन भी गए कि मेरे पास फॉर्म 45 है, ये नहीं जीता, ये जीता है। तो ये, और जब आपके मुखालिफ भी बैठकर ये बात कर रहे हो तो उस चीज को भी वो सवाल उठाना इसमें। साहब हम आपस में यही बात कर रहे हैं, हम किसी बात पे इख्तलाफ है यहाँ पे। अगर मियां शहबाज शरीफ भी यही कह रहे हैं और मैं भी यही कह रहा हूं और खोकर साहब भी यही कह रहे हैं और आप भी यही कह रहे हैं, तो क्या थोड़ा सा बोझ पीटीआई पे नहीं कि वो आके बैठ जाए और इसको इन्वेस्टिगेट कर ले और बात करे और खुद देख ले कि क्या होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन हम ये फिक्सिंग जो, बिकॉज यू आर एन आउटसाइडर, इट्स ईजियर फॉर यू टू टेक लॉट ऑफ दीज प्रिंसिपल्ड पोजीशंस। अगर आपने इसको फिक्स करना हो, कैसे फिक्स करेंगे? काशिफ भाई, सबसे पहले तो ये जो डोनाल्ड लू की सारी लाइव खिताब जो चला पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर, और उसमें अमूमन हमारे ज़हन के अंदर ये ख्याल होता है कि जब डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शंस, तो अमेरिका से अगर कोई बात आए तो वो एक सहीफे की हैसियत रखती है। मैं इसमें ये मुकदमा आपके सामने सबसे पहले रखना चाहूंगा कि आज ये वो वाला अमेरिका भी नहीं है। इस लिहाज से नहीं है कि इस वक्त जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है, आज तकरीबन 35,000 के करीब बच्चे, ख़वातीन, लोग वहां पर शहीद हो चुके हैं। पूरी की पूरी जो आलमी दुनिया है जिसकी सरबराही अमेरिका बहादुर के हाथ में है, वो इजराइलियों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। और वहां से बैठकर जो सरमन्स है ना कि जी के ऐसे होना चाहिए, डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए, तो ह्यूमन राइट्स की ऐसी परवाह होनी चाहिए और इलेक्शंस की अंदर ट्रांसपेरेंसी ऐसी होनी चाहिए, इनकी सरमन्स की आज के रोज में, आज की दुनिया में कोई औकात नहीं है। कोई अमरीकियों के पास हायर मॉरल ग्राउंड नहीं है, और ना सिर्फ अमरीकियों के पास बल्कि पूरी वेस्टर्न दुनिया के पास आज हायर मॉरल ग्राउंड नहीं है कि वो हमें किसी भी चीज के ऊपर लेक्चर कर सके। हमने अगर अपना मुल्क दुरुस्त करना है तो हमने अपने लिए दुरुस्त करना है। बिल्कुल। हमने अपना मुल्क दुरुस्त करना है तो अपनी आने वाली नस्लों के लिए उसको दुरुस्त करना है।
इसलिए कि हम एक बेहतर पाकिस्तान उनके लिए छोड़ के जाए। मैं अपनी जिंदगी के अंदर मुझे यह लग रहा है कि मैं वो पाकिस्तान नहीं देखूंगा अनफॉर्चुनेटली। जब मेरी उम्र थी, आपकी भी 24-25 साल हम लोगों की उम्र थी, तो हम ये समझते थे कि हमारी जिंदगी के अंदर पाकिस्तान बदल जाएगा, नहीं बदल सका। अब खौफ इस चीज का है, दुख इस चीज का है कि हमें यह नजर आ रहा है कि हमारे बच्चों की जिंदगी में भी शायद पाकिस्तान बेहतर ना हो सके, और उसको बेहतर करने के लिए जो कदम हमने उठाने हैं, हम में से कोई कदम उठाने के लिए हम तैयार नहीं। पीछे की तरफ जाना चाहते हैं, आगे तरफ कोई नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना चाहते। अब ये जो इन इलेक्शंस के अंदर देखिए, पाकिस्तान के अंदर हर इलेक्शन के ऊपर सवालात उठे, लेकिन मुझे जिस चीज से एक बहुत दुख हुआ, खौफ हुआ, पैदा हो गया कि अब ये इलेक्शन का पूरा जो प्रोसेस है, अवाम की जो वोट की हैसियत है, वो बेमायनी करके रख दी गई है। अवाम वोट किसी को दे, पहले होता था कि इलेक्शनों के ऊपर सवालात उठते थे, कुछ हलकों के अंदर हेरा फेरी हो गई, जहां पे 500,000 वोट का फर्क है, इधर से उधर हो गया मामला, प्री पोल रिगिंग हो गई कि जी इत्तेहाद बनवा दिए, ये हो गया, बंदे तोड़ लिए। ये जो नई रस्म पड़ी है 45 और 47 वाली के आप जो मर्जी है आपके पास फॉर्म 45 हो, जिस मर्जी है को आपने वोट दिया हो, उसको आपने 20,000 की लीड से आपने जिताया हो, मैटर 47 करेगा, और 47 को आपने रद्दोबदल करके लोगों के हाथ में पकड़ा देना है, और उन्होंने जाके वहां पे 47 हमारे हाथ। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर रस्म पड़ी है, ये पूरा इलेक्शन का प्रोसेस, पूरी की पूरी सियासत, ये बेमायनी होकर रह गई है। और अगर हमने अपने आप के लिए इस चीज का एहसास नहीं करना, इसको दुरुस्त नहीं करना, इसकी तहकीकात नहीं करनी, अगर ऑडिट की बात अमरीकी करें तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। हमें ये अपने लिए करना है कि क्या हम अपने मुल्क के अंदर ये रस्म डालना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ने बात की कि हम कुर्सियां हमारी बदलती रहती हैं। आज जिस कुर्सी पर डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद नहीं होंगे इसके ऊपर। तो जब अपोजिशन में होंगे और डॉक्टर साहब के साथ, इनकी पार्टी के साथ जब यही तर्ज अमल अगर इख्तियार किया गया, तो क्या फिर बाकी उसको वेलकम करेंगे? उस वक्त ये सारे बैठ के रो रहे होंगे। और ये होना है पाकिस्तान के अंदर, हर सियासी जमात बैठ के रोएगी कि अगर आपने इलेक्शनों से पहले जाकर कहीं और बैठकर आपने लेन देन करके अपना हिस्सा लेना है, तो आपने तो पूरा का पूरा पर्पस ही डिफीट कर दिया ना सारे निजाम का। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली ये लग रहा है कि जो हमारी माशी हालत है, हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो इन चीजों की वजह से मजीद आगे बढ़ेगी। उसको दुरुस्त करने की हमारे अंदर कोई सलाहियत मौजूद नहीं, हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश भी नहीं करना चाहते। जो तहरीक इंसाफ की बिलाशुबा उनकी बहुत बड़ी गलती है। ये साइफर वाले मामले को जिस तरह उन्होंने ब्लो अप किया, बहुत बड़ा उन्होंने एक गलत काम किया, उसको एक पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। IMF उसके सामने जो जाकर एहतजाज कर रहे हैं, जो IMF को खत लिख रहे हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की सियासत के अंदर आपको अपना जो आपने अपना हिस्सा लेना है, अपनी जो तगदो करनी है, वो यहां पर अपने ही रूल ऑफ गेम है, उनके तहत ही करनी है। लेकिन साथ ही साथ ये तवक्को भी नहीं करनी चाहिए कि जब आप उनको चपेड़े मारते जाएं, उनसे उनका निशान छीन लें, उनसे कौमी असेंबली के अंदर उनको जो उनकी मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए थी वो उनको ना मिले, उनको आप बिल्कुल दीवार से लगा दें और कहेंगे कि आओ हमारे साथ बैठते क्यों नहीं। रिकाउंट में और सीटें वापस आएंगे। तो हुकूमत को भी बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, सियासी कैदियों को रिहा करना पड़ेगा, कोई आप मुल्क के अंदर नॉर्मलसी तो वापस लाने की कोशिश करें। सम स्टेप्स शुड बी टेकन। मलिक साहब, इट्स टाइम, प्राइम मिनिस्टर, अगर सम स्टेप्स कैन बी टेकन टू मेक एन एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल तो बनाए। पहली बात तो मुस्तफ़ा का मेरा बड़ा कम किसी बात पे इख्तलाफ होता है, और आज भी इख्तलाफ नहीं हुआ, आपके साथ भी नहीं हुआ, हम तीनों ने मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही बात की है। लेकिन इसमें और पिछले इलेक्शन में फर्क क्या है 2018 में और 2024 में? जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा किया, अगर क्या ऐसा किया गया, ऐसा तो हुआ है। फर्क यह है कि पिछले इलेक्शन में फॉर्म 45 दिया ही नहीं गया, यानी उस वक्त जो भी उस फॉर्म का नाम था वो दिया ही नहीं गया। 7 बजे बुला के धक्के मार के तमाम पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल के बिठा दिया गया इलेक्शन की ट्रांसमिशन को, और 4 बजे 5 बजे सुबह ऐलान कर दिया गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्क के वजीर आजम हैं, और RTS बिठा दिया। जी, RTS बिठा दिया। और रीजन वाई ये जो इस वक्त कागज हम लेके फिर रहे हैं फॉर्म 45, ये उस वक्त आग नहीं लगी, उसकी वजह कि फॉर्म 45 किसी के पास था ही नहीं, यानी किसी को दिया ही नहीं गया। आप सोचे कि इलेक्शन खत्म हो गया। वाला बात ज्यादा सख्त है, लेकिन बहुत चंद केसेस में ऐसा होता है। नहीं, देखिए, चंद तो नहीं था ना। अगर चंद में होता तो RTS बिठाने की जरूरत नहीं थी ना। चंद तो मैनेज हो जाते हैं। चंद मैनेज हुए, चंद तो पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम इलेक्शंस में मैनेज। मैं ये कह रहा हूं चंद तो मैनेज हुए, मगर चंद नहीं हुए ना। मैं आपको बताऊं चंद में क्या हुआ। देखिए, पहले सुन ले, मेरी गुजारिश आप ही को सुनूंगा। चंद इलेक्शन से पहले मैनेज हो गया,
साउथ पंजाब महाज बन गया, 20-25 सीटें वहां पक्की कर ली गई कि ये इधर से होंगे, फिर कुछ बंदे तोड़े गए। मुझे याद है उस वक्त की एक ब्रीफिंग मैंने कहा, मैं जी आज भी आप बंदे तोड़ के इधर से जाएं उस पार्टियों में, कब तक हम पाकिस्तान ऐसे चलाएंगे। लेकिन हमने फिर भी, और उस टाइम मेरे सवाल का पहला जुमला था कि सर वी हैवंट लर्नड एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री, हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा, और वही कुछ इधर हुआ। ये प्रॉब्लम ये है सर, आई एम नॉट सेइंग कि एक ठीक है दूसरा गलत है, एक कम है ज्यादा। आई विल नेवर जस्टिफाई और क्वालिफाई वन अगेंस्ट द अदर। गलत 5% भी गलत है, गलत 50% भी गलत। ये आपकी बात ठीक है कि 2018 में भी हुआ, आगे चलने की बात है। मुझे बताएं यहां से हमने क्योंकि 18 में भी हुआ। तारीख को मैं ये पर्सपेक्टिव इस वजह से क्लियर कर रहा हूं कि इस पर्सपेक्टिव के बगैर आपको लगेगा कि इस दफा कुछ हो गया है, और मैं आपको ये कह रहा हूं कि हर दफा कुछ होता है, और किसी दफा फॉर्म आपके पास होता है, किसी दफा फॉर्म आपके पास ही नहीं होता। जो असल बात है वो वही है जो मैं पहले भी मैंने गुजारिश की। वुड यू एग्री कि अमूमन 15-20, 16-20 के फर्क पूरे किए जाते हैं, यहां 5-20, 7-20 का फर्क पूरा किया ना। जब 2018 में हमारी यही फीलिंग थी कि हमेशा होता ये है कि 15-20 के वो किए जाते हैं, पुर किए जाते हैं जो फासले होते हैं, और इस दफा 5-20 के हो गए। लेकिन हमारा 5-20 नहीं, क्योंकि वो माजी में चला गया है। अब मैं ये कह रहा हूं, जो आपका ग्रीवेंस ठीक है वो ठीक ग्रीवेंस, मैं ये कह रहा हूं, देखिए ना सिर्फ ग्रीवेंस, वो 35 पंक्चर किधर गए जी? मतलब वो बंदा खुद खड़े होके कह रहा है कि मैंने तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दी थी, 35 पंक्चर की पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दी थी। ये तो बड़ी अजीब बात है। अब आप इस इलेक्शन को देख लें, केपी के अंदर इन्होंने स्वीप किया, उसी इलेक्शन कमीशन के तहत स्वीप किया। मौलाना वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां नहीं करे वैसे कर रहे हैं। अच्छा वैसे पीटीआई से तो मिले हैं, नहीं पीटीआई के साथ फासले कम हुए हैं। भाई मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन के रिजल्ट्स पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं उधर के नहीं, वो इधर के कर रहे हैं। चलें, आपको खैबर पख्तूनख्वा के भी कर रहे हैं, बलूचिस्तान के भी कर रहे हैं। आप सिंध में चले जाएं तो पीपल्स पार्टी कराची को प्रोटेस्ट कर रही है, जीटीए उधर कर रही है। मौलाना साहब देखें सिंध को बुनियादी तौर पे सर, एक सेकंड सर, बुनियादी तौर पे हम गुजरांवाला हार गए, हम फैसलाबाद हार गए, हम सरगोदा हार गए। वो जगह जिनको गढ़ समझा जाता है, जो आपने तमाम एडवर्सिटी के बावजूद लास्ट टाइम रिटेन किए। लॉजिक ये कह रहा है, लॉजिक जो प्रमोट किया जा रहा है वो ये है कि आप तो इतने बुरे हार रहे थे कि आप बचाने के बावजूद भी नहीं बच सके। ये अजीब लॉजिक है। हाँ, उधर नहीं है, उधर नहीं, जिधर मौलाना प्रोटेस्ट कर रहे हैं उधर नहीं, वो तो फेयर। तो बात ये मलिक साहब, मैंने डंडा उठाया हुआ आपके सर के ऊपर और आप वहां से खड़े होकर मैं मान गया नाच के जीत जाओ। मैं आपको कौन तुम जीते कैसे हो यार? मैं समराइज कर देता हूं ना। मैं कह रहा हूं तो समरी ये है कि केपी का इलेक्शन फेयर हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने करवाया फेयर इलेक्शन, और शानदार तरीके से एक फेयर इलेक्शन में ट्रांसपेरेंटली पीटीआई क्लीन स्वीप करके निकल गई, और सिंध का भी इलेक्शन ठीक हुआ है। लेकिन ये जो पंजाब का इलेक्शन है ना, इसके अंदर हुई है हेरा फेरी। बाकी इलेक्शन बिल्कुल ठीक है, एक ही इलेक्शन कमीशन। सर वैसे पिछले दफा आप पंजाब जीते थे जी, मैं आपको फिर भी आप कहते धांधली हुई है। मैं तो आपको पीपल्स पार्टी सिंध जीती थी, वो कह रही थी धांधली हुई है। तो काशिफ साहब, ये तो आर्गुमेंट आपका गलत है ना कि आज वो केपी जीत गए। आप मेरा मुकदमा जो है उसको मजबूत कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको कमजोर कर रहा हूं। नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप लास्ट टाइम धांधली का नैरेटिव बयानिया लेकर निकले थे, आप पंजाब जीते थे, पीपल्स पार्टी लेकर निकली थी, सिंध जीती। काशिफ एक सेकंड, माफी चाहता, एक सेकंड। काशिफ अब्बासी साहब, आप बिल्कुल वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं कि मैं जब लेकिन किसी ने नहीं कहा आप झूठ बोल रहे हैं। भाई आप दोबारा ऐसे ही नहीं कहा, मैं तो रोज टीवी पे जाता था। आप कैसी बात कर रहे हैं? 35 पंक्चर के नाम पर जो हमारा नशर किया, 2013 का इलेक्शन, मैं 2013 भी है, 2018 की भी बात, 2018 में 35 पंक्चर नहीं, मुझे पता है। मैं आपको हर इलेक्शन की दास्तान सुना रहा हूं। मैं आपको यह कह रहा हूं कि यही गुफ्तगू हम कर रहे थे 2018 में, बिल्कुल यही गुफ्तगू कर रहे थे, और आप उस वक्त बहुत ऑडियंस नहीं भी थी। हम जाते थे 6 बजे टीवी के प्रोग्राम करने, रात को 11 बजे तक प्रोग्राम करते थे। बहुत ऑडियंस थी भी, आपकी तरह के प्रोग्राम में आते थे, हमें एक फेयर जजमेंट मिल जाती थी। बड़े प्रोग्राम है जिधर आप इधर बात करते थे तो कहते डॉन लीग दी 10 भाई, हम कहते हैं अच्छा डॉन की बात, वो कहते फिर पनामा 10 ना, तू जरा तो हेगा तो चोर ही है ना, तू विचो तो चोर है ना। तो ये प्रोग्राम हमने किए हुए हैं, सारा 4-4 घंटे किए हुए हैं। तो ऐसा नहीं, मैं वाहिद चीज स्टैब्लिश ये कर रहा हूं कि ये जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, आप रिकॉर्डिंगें निकाल के देख लें, आपको ये मुख्तलिफ प्रोग्रामों के अंदर यही बात, मैं उधर बैठा हुआ था, कोई और इधर बैठा हुआ था, इसको ठीक करना हम पे मुकर्रर है, हम पे फर्ज है। हमारे कैसे करने में आता हूं, ही वांट्स टू मेक अ पॉइंट। फिर आता हूं, अब आपने क्योंकि फर्स्ट स्टेप्स तो आपने लेने। देखिए बड़ा क्विकली मैं कि डॉक्टर साहब ने अपना एक मुकदमा रखा
गुजारिश ये है कि हम हर इलेक्शन की जो निटी ग्रिटीज है ना उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। 2018 के इलेक्शन पे, 13 के इलेक्शन पे, ये जो अभी इलेक्शन हुआ इस पे कि गुजरावाला में क्या हो गया, सरगोदा, पेशावर, लड़काना, गवादर में क्या हो गया, हम ये बात कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन के ये जो पिछले 10 सालों में रस्म पड़ चुकी है कि अगर जो दौरे हाजिर की एस्टेब्लिशमेंट जो हो वो अगर आपके मुखालिफ हो तो फिर आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, आपने ऑपोजिशन नहीं बैठना है, और अगर आप जीत भी रहे हुए तो आपको वो इलेक्शन हरा दिया जाएगा। जीत सकते। तो हमें जो चीज दुरुस्त करने की, हम भले एक दूसरे के साथ मारधाड़ जारी रखें, हमारा मिजाज ऐसा बन गया है मारधाड़ आप जारी रखें, लेकिन एक चीज को अगर हम फंडामेंटली तय कर लें कि अवाम का जो फैसला होगा वो चाहे जो मर्जी हो, जिसके मर्जी के हक में हो, हमारे बड़े से बड़े मुखालिफ के हक में हो, उसके सामने हमने सर तस्लीम खाम करना है। हम ये कब तक ये अब जो गुफ्तगू पहले की कर रहे हैं उस सारी 2018 की गुफ्तगू जो डॉक्टर साहब ने मुकदमा पेश किया, जो इनके साथ जो हुआ, जो उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी, जो होता रहा, हम सब के इल्म में, हम टीवियों पे ऊपर बैठ के बात नहीं करते, मसलहत के तहत नहीं करते, लेकिन सारी दुनिया खल्के खुदा को तो पता है, हमें भी अंदर से पता है कि क्या हो रहा था और अभी भी हमें पता है कि क्या हो रहा है। ये अब कब तक सिलसिला जारी रखना है? आपने मुल्क हमारा अपना है, 76 सालों से हम यही हरकतें करते आ रहे हैं और इन हरकतों का नतीजा आज ये है कि आज पूरे खित्ते के जो बाकी ममालिक हैं वो हमसे आगे निकल गए। आज पाकिस्तान का मवाजना दुनिया के कमजोर तरीन और ऐसी रियासतें जो नाकाम तरीन रियासतें हैं उनसे किया जा रहा है। किस वजह से किया जा रहा है? हमारी अपनी गलती है, हम किसी को इल्जाम नहीं दे सकते। और जब इंसान इर्तिका के अमल से गुजरता है, मेरे से भी गलतियां हुई हैं, डॉक्टर साहब से भी होती हैं, मीडिया से भी हुई हैं, एब्सोल्युटली ये तवक्को हम नहीं करते थे, कम से कम मैं नहीं करता था कि इतने बड़ा एक लंबा सियासी सफर तय करने के बाद आज मियां नवाज शरीफ साहब वो इस सारी सूरत हाल को यकसर एक्सेप्ट करके खुश हो जाएंगे कि जनाब जिस चीज के ऊपर 2018 में एहतजाज करते थे, वैसे मियां साहब एक्चुअली वोट को इज्जत दो की बात करते थे, वोट की इज्जत दो का तो नैरेटिव आपका था। आज ये जो वोट को इज्जत दी जा रही है, जो वोट की तौकीर की जा रही है, जिस तरीके से की गई है, आपको तो सबसे पहले खड़े हो जाना चाहिए था कि जनाब ये तो हमारा बयानिया रहा है, हम ये तस्वर भी नहीं कर सकते हम ये कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा ऐसी चीजें होंगी, भले हम हार रहे हैं लेकिन हम तस्लीम करते हैं अवाम का फैसला। तो वो जो एक हायर मॉरल ग्राउंड आपने सियासत के अंदर छोड़ा, अपनी पोजीशन छोड़ी, अपना बयानिया छोड़ा, किस मकसद के लिए छोड़ा? तो खोखर साहब जब ब्रेक के बाद जब एक से वन लाइनर जिस वक्त मियां शहबाज शरीफ ने कहा आए हुकूमत बनाए तो क्या कहा उसने? क्या कह रहे थे? यही कह रहे थे कि अच्छा भाई आपको लगता है आप आ जाएं, क्योंकि हम करेंगे तो आपने मानना नहीं और वही हो रहा है, आप ऐसा करें कि आप आ जाएं। आप मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दें, जब खुर्शीद शाह ने फोन उठा के कह दिया पीटीआई को कि हम आपकी हुकूमत बनवाते हैं, आप आए, तो उस वक्त हुकूमत ना बनाने का जवाब क्या था? यानी वोट किस चीज के लिए मांगा था? सिर्फ आग लगाने के लिए, आईनी बहरान पैदा करने के लिए, सिर्फ मड स्लिंगिंग के लिए, सिर्फ गाली गलोच के लिए? जब आपको कहा जा रहा है कि आप आए अपनी सुपरविजन के अंदर, अपनी सुपरविजन में, अपनी हुकूमत में जितने थैले जो कुछ करवाना है करवा लें, जो तब्दीली करनी है तो आए ना भाई, आए ना, आके हुकूमत बनाएं। ये मैं आपसे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर आप भी आजाद होते तो शायद ये हुकूमत बनाने को आप भी तैयार ना होते, बिकॉज़ इट्स वेरी अनस्टेबल गवर्नमेंट। नहीं, हम तैयार पहले भी। और ये कंपल्शन किसी पे आप नहीं डाल सकते। कल आपको सीटें मिले, यू बिकम द बिग पार्टी और कहेगा आप इसके साथ जबरदस्ती। ऐसा नहीं है। आपने मियां नवाज शरीफ का, आपने मियां नवाज शरीफ ने क्यों नहीं हुकूमत बनाई? मियां नवाज शरीफ ने कहा था मुझे सिंपल मेजोरिटी मिलेगी तो मैं हुकूमत बनाऊंगा। वो भी यही कहते हैं सिंपल मेजोरिटी नहीं हुकूमत बनाऊंगा, इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है? हमने कोalition में बनाई ना, तो इसका मतलब है कि हमें फिर आईनी बहरान पैदा कर देना चाहिए था ना कि मुल्क के अंदर से जमहूरियत खत्म हो जाती, मुल्क के अंदर एक नई केयर टेकर आती, वो कब तक चलती? आईनी बहरान पैदा हो जाए, मुल्क जो है। मैं इसके ऊपर आता हूं, मुझे ब्रेक रखा जा रहा है। ब्रेक लेते हुए मैं फिर एक चीज दोबारा क्लैरिफाई करूं, वो जो आप बात कर रहे थे ना पिछले इलेक्शंस की, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि ये किसी को भी कहना चाहिए कि 2018 में आप कहीं धांधली हुई है। सर क्या बात करें, पंजाब में तो लार्जेस्ट पार्टी आप बने। This is not even an argument. नहीं, this is an argument. This is not an argument. This is an argument because this is a stable argument. फैसला करना है ना काशिफ भाई, मेरी नजर। तो ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद हर दफा ये है ना, फिर भी आप लार्जेस्ट पार्टी होके भी आप हुकूमत नहीं बना सके। तो ये पीटीआई भी बना लेती ना, वो भी तो ये आपको भी नहीं बनाने दिया गया ना। वो अगर उनके पास वोट ज्यादा हैं और अगर वो केपी के अंदर इतनी बड़ी लैंड स्वीप, तो आए ना हुकूमत बनाए और मसाइल को सॉल्व करें। और इलेक्शन का आंसर तो देना सर, आपने कर लिया। आप ऐसी हुकूमत बनाने को तैयार हैं। मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात थी कि आप इतनी बड़ी हुकूमत, इतनी कमजोर गवर्नमेंट बना के आ गए। करते हैं कि एक आईनी बहरान पैदा करते हैं। चले ब्रेक के बाद ये क्या बात?
हर बड़े पैक पर 10% 30 ऑफ। पैक तो पेप्सी ने की है, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑफर। अब समझ आया। Reach for more. Spark Beyond. Spark 20 Pro Series. Techno. सिटीजन्स फाउंडेशन मयारी तालीम के जरिए लाखों बच्चों का मुस्तकबिल रोशन बना रहा है। इस सफर में TCF का साथ दे और बदले लाखों जिंदगियां। आप अपने बच्चों को मलेरिया या डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो अभी लगाएं पावर प्लस लिक्विड मॉस्किटो रिपेलेंट, अब नए और पावरफुल फॉर्मूले के साथ। पावर प्लस, मच्छरों का पावरफुल दुश्मन। खुशी मनाने का असल तरीका तो लोगों का दर्द बांटना है। पटेल हॉस्पिटल, दर्द बांटने के 25 साल। ज़कात और एहतियात के लिए 111 174 174। नेमतों में बरकतों का कमाल, ये सुनहरा सा लाल, रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। Reach for more. Spark Beyond. Spark 20 Pro Series. Techno. कोई भी नहीं सर, सिर्फ कर्शी स्पगोल। 68 क्वालिटी टेस्ट एंड चेक्स और बेहतरीन पैकिंग, इसीलिए तो क्वालिटी स्पगोल, सिर्फ कर्शी स्पगोल। Every click is a painting on the canvas. Light flows in the colors of peacock feathers. Endless flow of waving aqua. Each portrait is a studio-level masterpiece. Spread from near to far. From candid moments to posed perfection. Inspired elegance at every glance. Brush strokes of light, capturing moments of delight. Vivo V30 5G. Light it up. Vivo. बाल कुछ ही घंटों में फ्रिजी हो जाते हैं और दिन खत्म होने से पहले पार्लर्स और सैलून्स बंद। मेरी स्टाइलिस्ट ने कहा सैलून तो तुम्हारे घर पे है। सैलून स्मूथ बाल घर पे। ट्रस्ट मी, केराटिन स्मूथ। For every future quest, it is innovation that gears you. With the all-new Opel Renault 11F, hold the power of innovation in your hand and keep living in the era of innovation that never ends. हर बड़े पैक पर 10% 30 ऑफ। पैक तो पेप्सी ने की है, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑफर। अब समझ आया। Reach for more. Spark Beyond. Spark 20 Pro Series. Techno. कुछ लम्हे कभी बनते हैं मनपसंद बाइट्स का पार्टी टाइम। आपके ऐसे ही लम्हों में भर रहे हैं हम। सेफर हेल्दी का यकीन। KNNs। कोई भी नहीं सर, सिर्फ कर्शी स्पगोल। 68 क्वालिटी टेस्ट एंड चेक्स और बेहतरीन पैकिंग, इसीलिए तो क्वालिटी स्पगोल, सिर्फ कर्शी स्पगोल। इस सफर में TCF का साथ दे और बदले लाखों जिंदगियां। नया पावर प्लस सुपर स्प्रे, अब नए और पावरफुल फॉर्मूले के साथ। पावर प्लस, अब रहो पावर। पेश है नया तलो, एक्टिव एनर्जी से भरे खाने, इसीलिए सब बच्चे यही है चाहते। मेरे दिल में सुराग था, लेकिन PCHF ने मुझे नई जिंदगी दी। इस साल अपनी ज़कात PCHF को दे। नेमतों में बरकतों का कमाल, ये सुनहरा सा लाल, रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। तारा ग्रुप का तारा 786 हाइब्रिड राइस सीड पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार देने और क्वालिटी में नंबर 1 की पहचान, जो दे ज्यादा झाड़, करे पौधे का तना ज्यादा मजबूत, जिससे फसल गिरने से महफूज और दाना बनाए ज्यादा लंबा, फिर मेहनत रंग लाए तो हर खुशी मुस्कुराए। ज्यादा पैदावार और क्वालिटी की पहचान सिर्फ तारा 786।
पेशेंस एड फाउंडेशन आपके एहतियात से जिन्ना हॉस्पिटल में लाया है इलाज में इनकलाब, ताकि हर एक को हासिल हो मुफ्त मेयारी तिब्बी सहूलियात। तो आए पेशेंस एड फाउंडेशन को दें अपनी ज़कात और एहतियात, क्योंकि मुफ्त इलाज हर इंसान का हक है। इफ्तार के बाद चाहिए वही बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका, तो हो जाए एक कप और चप्पल दानेदार, तुम में एक और कप चाय। हमारे गांव की पसमानदगी, हमारे घर की गुर्बत क्या कम थी कि अब कैंसर से भी लड़ना पड़ेगा। इसकी दरखास्त है कि इस साल भी ज़कात देते वक्त सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट को याद रखिए। नया पावर प्लस सुपर स्प्रे जो मारे लाल बेग, मच्छर और दूसरे कीड़े मकोड़ों को सिर्फ 10 सेकंड में। नया पावर प्लस सुपर स्प्रे अब नए और पावरफुल फॉर्मूले के साथ। पावर प्लस, अब लहो पावर से। इस रमजान ट्राई टैंग लेमन पेपर का फ्रूटी फ्लेवर और रखें अपने बच्चों को रिफ्रेश। टैंग बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना। सिटीजन्स फाउंडेशन मयारी तालीम के जरिए लाखों बच्चों का मुस्तकबिल रोशन बना रहा है। इस सफर में TCF का साथ दे और बदले लाखों जिंदगियां। गवर्नर सिंध की सरपरस्ती और ताजिर बिरादरी के ताउन से बदर एक्सपो मुनक्किद कर रहे हैं बचत एक्सपो, जिसमें अशियाए खुर्दनोश हासिल करें इंतहाई रियायती कीमतों में। 21 से 23 मार्च कराची एक्सपो सेंटर में। नेमतों में बरकतों का कमाल, ये सुनहरा सा लाल, रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। क्या आप जानते हैं कि एक आम पंखा रोजाना औसतन 1.5 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करता है, जबकि इसके मुकाबले में GFC 30 वॉट्स इन्वर्टर फैन आधा यूनिट इस्तेमाल करता है, यानी बिजली के बिल में हर माह पूरे 30 यूनिट तक की बचत। आज ही GFC रमजान रिप्लेसमेंट ऑफर से ये पुराना पंखा बदलवाएं और घर ले आए रियायती कीमत पर GFC 30 वॉट्स इन्वर्टर फैन। GFC, बेहतरीन पर यकीन। मेरे दिल में सुराग था, लेकिन PCHF ने मुझे नई जिंदगी दी। इस साल अपनी ज़कात PCHF को दें। जब उनका दम होता यूनियन ग्रीन कॉलेज रोड पर एक मुकम्मल गेटेड कम्युनिटी, 3 मरला रिहायशी और 4 मरला कमर्शियल, रेडी फॉर पोजेशन प्लॉट्स। 31 मार्च 2024 तक अपने प्लॉट का कब्जा हासिल करें। यूनियन ग्रीन 08,000 9000। खुशी मनाने का असल तरीका तो लोगों का दर्द बांटना है। पटेल हॉस्पिटल, दर्द बांटने के 25 साल। ज़कात और एहतियात के लिए 111 174 174। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने ज्यादा कैपेसिटी वाले डॉलर्स रेफ्रिजरेटर्स अप टू 40% बिगर क्रिस्पर और सेव कर सके अप टू 50% एनर्जी, क्योंकि डॉलर्स रिलायबल है। करो हर सुबह, हर शाम, हर घूंट वाइटल के नाम। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। ऐसे सख्त सूखे दाग निकाले नया सर्फ एक्सेल आसानी से। सर्फ एक्सेल जैसे दूसरों का ख्याल बनाता है रमजान को खास, ऐसे ही करशी जामे शीरी देता है रमजान का असल एहसास। करशी जामे शीरी, रौनक के रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़ाहिर है वो डोनाल्ड डू की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें जो सवाल पूछे गए और उनके जवाबात थे बहुत से हालात, ज़ाहिर है इलाकाई, अब उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा टाइम भी चला गया। लेकिन ये बताएं कि अब आगे क्या देख रहे हैं मलिक साहब? वेयर डू यू सी दिस गोइंग? ये जो अब तो टर्मोइल नजर आ रही है। मुझे तहरीक इंसाफ के 2 बयान बता दें। इमरान खान के जेल में रहने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये आज ऐलान कर दिया तहरीक इंसाफ। दूसरा वो कहते हैं जनाब हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जलसे होंगे। क्या फिर दोबारा उस तरफ मामला जाता नजर आ रहा है? क्या है जी कि फिर बाहर आई वही दश्त नवर्दी होगी, फिर वही पाँव वही खैर मुगीला होंगे। वाह वाह डॉक्टर। ये 2013 में भी यही था, 2018 में भी यही था, 2024 में भी यही है। जब तक हम आपस में मिल नहीं बैठेंगे, देखिए आपने सियासत करनी है तो बात तो करनी पड़ेगी। बट यू रियलाइज, एक सेकंड, क्योंकि वक्त कम है, आपका जो यहाँ इकट्ठे करने की चीजें बहुत कम मुझे नजर आती।
नहीं, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं कि हम सब ये समझ रहे थे तो चीफ मिनिस्टर केपी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास क्लास हुई है उधर जाके, वो जो हुई है या नहीं हुई, मगर आप समझते हैं बड़ी बात कि क्या इमरान खान साहब का इतना भी इख्तियार नहीं था कि एक शख्स जिसको उन्होंने हैंड पिक करके चीफ मिनिस्टर बनाया वो वैसे ही मुंह उठा के चला गया। ये तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। तो एक मैं समझता हूं कि मस्बत थोड़ी सी तब्दीली थी। उसी दिन आपको याद होगा बैरिस्टर गौहर ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो ये दो बयानात ऊपर नीचे जो आए, सुबह उनका आना, फिर उसके बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीटिंग पॉइंट यही है कि बैठ के आप बात करेंगे तो बात आगे चलेगी ना, ऐसे तो नहीं चलेगी। क्यों असर है? मैं काशिफ भाई ये दोस्त होते हैं ना, दोस्त इसी तरह फायदे उठाते हैं। नहीं, वो ठीक है, लेवरेजेस देते हैं इस तरह की। आप सीरियस बात कर रहे हैं और वो हम इतना सीरियस होकर ये जो गुफ्तगू है ना, हम कई दफा हर रोज ही तकरीबन टीवी चैनल्स पर बैठ के करते हैं। सवाल ये है कि सियासी जमातों के इख्तियार में क्या है? नहीं, जब सियासी जमातों के इख्तियार में कुछ है ही नहीं, अपने फैसले जो हैं सियासी जमातों ने जब वो लीज आउट कर दिए हैं तो फिर तवक्को यही की जाएगी। मैं बताता हूं आपको। तो सबसे पहली जो चीज मेरी नजर में करने की जरूरत है वो सियासतदानों को आपस में इकट्ठे होने की जरूरत है एक नुक्ते पर, कि यार कि हम आपस के अंदर जितनी लड़ाई बढ़ाई हमने करनी है हम भले करते रहे। आगे भी ये सियासत का एक हिस्सा है कि आप जाहिर बात है एक दूसरे से मुखालफत और एक दूसरे के प्रोग्रामों से मुखालफत, उसी की जिद में आप सियासत करते हैं ना, लेकिन हम उसको इतना आगे नहीं लेके जाएंगे कि हमारे फैसले कोई और करे और इस तरह के फैसले करे कि जनाब ये हिस्सा आपका इस दफा, अगला हिस्सा आपका इस दफा, और ये कहानी चलती जाए। जी बेहतर डील बन गई हो, फिर ये रोकना पड़ा। तो ये मसला जो है, ये डील वाली जो सियासत है इसको खत्म करना पड़ेगा। और यकीन मानिए ये इस वजह से मैं कह रहा हूं कि 76 सालों से ये डील वाली जो सियासत है इसने मुल्क को किसी जगह नहीं पहुंचाया।